Hello बच्चों, let's read this question. How can you explain on the basis of structure that SF6 is less reactive than PCl5? So let us see the key concept of this question first. इस question का key concept है reactivity. Basically इस question में कहा गया है जो PCl5 molecule है that is less reactive than the SF6 and we have to explain this. So सबसे पहले हम hybridization देखेंगे for the PCl5 as well as SF6. जो हमारे पास PCl5 है that has the 5 sigma bond and अगर हमें hybridization निकालना है then we need to find the steric number and steric number is the sum of bond pair and lone pair and the number of lone pairs are equivalent to the side atoms of the molecule. तो यहाँ पे फॉस्फोरस के साथ 5 क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट है तो हमारे पास बॉन्ड पेयर हो गए 5 एंड फॉस्फोरस जो है दैट कैन फॉर्म मैक्सिमम 5 बॉन्ड बिकॉज इट हैज़ दी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सो लोन पेयर 0 है तो हमारे पास स्टेरिक नंबर 5 आता है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ज्योमेट्री फॉर्म होती है दैट इज द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड पैरेलली हम SF6 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो निकालेंगे बिफोर दैट वी कैन राइट हेयर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज द sp3d वो PCl5 नाउ SF6 में अगर हम देखते हैं SF6 के लिए अगर हम स्टीरिक नंबर निकालें देन इट विल बी 6 बॉन्ड पेयर प्लस सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एंड दैट ऑल आर बॉन्डेड विच मीन्स 0 लॉन पेयर एंड 6 स्टीरिक नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन आता है दैट इज द sp3d2 एंड जो ज्योमेट्री फॉर्म होता है वो होता है octahedral. Now let us make the structure for the PCl5 as well as SF6. जो PCl5 का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा फॉस्फोरस इन सेंटर 3 क्लोरीन के साथ एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा एंड जो हमारे पास 2 क्लोरीन एटम बचे उनके साथ एक अबव एंड बिलो हमारे पास बॉन्ड फॉर्म होगा एंड ड्यू टू विच 2 पिरामिड फॉर्म हो जाते हैं एक above and एक below the phosphorus. That's why it is termed as trigonal bipyramidal. Now here we can see जो हमारे पास ये ट्राइगोनल में हमारे पास जो बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं that are termed as the equatorial bond. जो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुए हैं that are the equatorial bonds and जो क्लोरीन हमारे पास above and below present है that bonds are termed as the axial bonds. These are the axial bonds. And जो हमारे पास axial bonds हैं repulsion के कारण these bonds elongate and due to which they become slightly weaker. And weak होने के कारण ये bonds जो हैं axial bonds easily break हो जाते हैं and due to this the reactivity of PCl5 is more whereas जब हम SF6 का स्ट्रक्चर बनाते हैं जो हमारे पास 6 बॉन्ड्स आते हैं all 6 bonds are equivalent
हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है एंड जितने भी हमारे पास एसएफ बॉन्ड्स हैं ऑल एसएफ बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। बट जो हमारे पास PCl5 था वहाँ पर हमारे पास axial bonds are weaker due to which reactivity of PCl5 is more. Hence, SF6 has the less reactivity than the PCl5. So let us write the same thing. Axial bonds, axial bonds of PCl5 are longer than equatorial bonds, equatorial bonds, and and hence slightly weaker than the equatorial bonds, weaker than the equatorial bonds, which makes PCl5 more reactive, which makes PCl5 more reactive. And in SF6 molecule, it has regular octahedral octahedral geometry, and all SF bonds are are equivalent, equivalent. So by this we can say that this was the whole explanation for this. Hope the solution was understandable. Thank you.